Good afternoon, everyone. Post-lunch sessions can be a little tiring, but I'll try to keep it short and to the point. Before I introduce myself, I come from the industry जो स्पाइस वालों के लिए आफ्टर एक्सपोर्ट्स एंड कंज्यूमर्स के बाद सबसे बड़े कस्टमर्स हैं. So I am here at Spice Summit as a customer of yours, telling what are our pain points जो अगर स्पाइस इंडस्ट्री फोकस करे तो मे बी वी कैन बिकम मोर वाइबल एंड मोर पोटेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन प्रोसेस्ड फूड्स. लंच के दौरान आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई गुड फ्रेंड कि हमारे इंडस्ट्री में स्पाइस का परसेंटेज किसी भी प्रोडक्ट में 4-5% से ज़्यादा नहीं होता, बट दैट 4-5% एंड दैट टू अलॉन्ग विद द सॉल्ट, उस 4-5% के बावजूद that 4-5% is so powerful, misbalance over there and your product is rejected on the basis of taste. And food में appearance and taste are the two criteria before we intake the product. So myself, Ashish Agarwal, I represent Bigharam Chanmal and I am here at 13 Global Spice Summit to share my thoughts ki how can spice sector grow sustainably and how we can get benefited from the growth of spice sector. Just to give you an overview about processed food market, how it is, and these all datas are validated. Government is giving these datas on various platforms telling the growth of the Indian economy. If you see the RT category from $6.2 billion, it will move to 12.3 by 2033. इंडियन नमकीन मार्केट जो हमारा सेक्टर है उसमें से 4.5 बिलियन से 11 बिलियन बाय 2033. इफ यू सी फ्रोजन फूड जो करंटली बीइंग वैल्यूड एट 1.5 बिलियन यूएसडी टू 0.6 बिलियन, एंड फूड सर्विसेज इसमें QSR, रेस्टोरेंट्स, होरेका, होटल सब आते हैं. इट इज ऑलरेडी अ 26 बिलियन मार्केट विच विल मूव टू 47 बिलियन मार्केट बाय 2033. Spice market itself is projected to grow. I may be wrong by 3-4%, but spice market itself is projected to grow from 25 billion USD to 55 billion USD in the next 8 to 9 years. And out of this currently 25 billion, 65% of the market comes from pure spices. हल्दी, धनिया, मिर्ची जैसे आप CTC बोलते हैं. Okay. So here, the category from which I come, processed food category, spices being the lowest percentage are the most important part. Before I move further, हमारे पेन पॉइंट्स पे एक और चीज़ पे जिस पे स्पाइस इंडस्ट्री ने शायद नोट किया होगा पोस्ट कोविड, दिस वाज ऑलवेज देयर, बट शायद पिछले 100 ईयर्स में वी हैव पुट द स्पाइस ओनली इनटू द टेस्ट मेकर्स, कि स्पाइस से सिर्फ टेस्ट आता है, कि ये टेस्ट के लिए डाला जाता है, इससे प्रोडक्ट खाने में कन्वीनियंट हो जाता है. बट व्हाट कोविड-19 डिड टू द वर्ल्ड वाज वी रियलाइज्ड कि वर्ल्ड व्यूज नाउ स्पाइसेस एज हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, this year in one of the very big exhibitions of India, there were close to 62 tea brands who were selling spice infused wellness products, and they were selling, their USP was कि they have successfully blended spice, maybe it might be clove, it might be turmeric, and world is still carrying on. Most of you guys who are very fond of Starbucks, they must have tried their turmeric latte, जिसे हमारी आम भाषा में हम हल्दी का दूध बोलते हैं, just topped up with the whipped cream. Okay. So the forum at which right now I am standing is one of the most powerful sectors जिसकी वजह से मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया को ढूंढा गया. देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड इन हिस्ट्री. कोलंबस ने इंडिया को ढूंढा स्पाइसेस के लिए, किसी ने और ने ढूंढा. सिल्क रूट की बात करते हैं तो हमें हमेशा स्पाइस प्लेयर्स बोला गया. क्या, आई एम नॉट गोइंग टू माइथोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 500, 700, 800 ईयर्स, जिसे आज की डेट में माइथोलॉजी के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं. कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, या दुनिया ने इंडिया को जीतने की कोशिश, लोगों को लगता है पैसों की वजह से दुनिया को हम फीड कर सकें, इसके लिए ढूंढा. क्यों?
In today's world also, if you see the palette, जो variety, जो color, एक पैनल पे इतने फ्लेवर्स की बात हुई, इतनी सारी टेस्ट को लेकर बात हुई, वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली इन 5% ऑफ दैट, बाकी 95% डेवलपमेंट हमारा है। क्या नोबडी नोज कोरियन कैसा है? हम में से किसी ने कोरियन टेस्ट किया, उसको फ्यूज़ किया, एंड हमारे को पता है आज कोरियन का क्या है। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कम्स फ्रॉम इटली, एंड आई कैन बेट पूरा इटली जितना पिज़्ज़ा बेचता है डेली, उससे ज़्यादा दिल्ली के अंदर रोज़ पिज़्ज़ा बिकता हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री। सो दिस इज हाउ पावरफुल वी आर इन गिविंग अ ट्विस्ट, इन गिविंग टेस्ट टू द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग माई विजिट टू सिंगापुर, मैंने वहाँ पे जितने भी बर्गर चेन्स देखी, उन सब में मैक्सिमम वेरिएंट 3 या 4 थे। हमारे यहाँ रोड साइड वाला भी 5 तरह 6 तरह के बर्गर बेचता है। नाउ आई एम कमिंग कि हम मेजर चैलेंजेस कहाँ फेस करते हैं। हमारे आउट ऑफ 5 रिजेक्शंस, 4 रिजेक्शंस की जो वजह है वो स्पाइसेस है। द स्पाइसेस वाई दे आर रिजेक्टेड आर, एक उनमें पेस्टिसाइड, एंड दूसरा द इशू ऑफ साल्मोनेला। नाउ कीपिंग असाइड द इशू ऑफ साल्मोनेला, वो हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से भी आ सकता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि स्पाइस के ही अंदर आता है, वो हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से भी आ सकता है। बट पेस्टिसाइड्स, उसमें प्रोसेसर का, हम वैल्यू चेन में और आगे आते हैं, वी डोंट हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट, incorporating pesticide to that. Why I am saying 4 out of 5? Because we also check on other ingredients. But as I said earlier, out of 14 ingredients which we use in making Bikaneri bhujia, 11 are spices. They are only 5%, but 11 products are spices. So while evaluating, I am giving you the realistic की maximum rejections हमारे spices की वजह से हो रहे हैं। Two important thing, we don't have traceability for spices. We don't get traceability. Why we don't have traceability? Because our suppliers don't have traceability. We were talking so much about AI. We were talking so much about कि AI की वजह से flavors हो रहे हैं. I guess the best thing AI can help us in the first thing is how we can trace our product कि वो कहाँ पर है. And I'll tell you, this is not difficult. इंडिया ये काम ऑलरेडी मिल्क में कर रहा है. इंडिया इज डूइंग दिस वर्क ब्यूटिफुल इन मिल्क, जो डेली प्रोड्यूस होता है. आ लिविंग एनिमल प्रोड्यूसेस मिल्क, एंड इफ दैट कैन बी ट्रेस्ड, तो आई डोंट थिंक स्पाइसेस आर दैट डिफिकल्ट, विच हैज अ साइकिल, जिसका एक फार्म साइज होता है, मे नॉट बी एकर्स बट स्मॉलर और बिग. तो देर इज अ साइज टू द फार्म विच कैन easily be traceable if people work for it. I'll be very honest, dairy had a visionary guy, Dr. Varghese Kurian. I hope somebody from spice sector will be Varghese Kurian for spices. It's high time when spice sector should talk about cooperative, how spice sector can turn into cooperatives. जिन 2 issues की मैं बात कर रहा था, 4 out of 5 are rejected because of spices, यार ये 2 वजह उनमें से हमारे सामने आती है. इससे पहले एक और जो चैलेंज हम फेस करते हैं, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन. मैक्सिमम सप्लायर्स डोंट गिव अस, वो जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं ग्राइंड करके, उसका ओरिजिन क्या है. वाइल पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चिली, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज द आस्टा, what is the potency in terms of spiciness. Similarly in turmeric, we are very concerned about what is the curcumin and all. But we have to be equally concerned now origin, because that not only sorts our problem, 50% it sorts our supplier problem also. If they tell us the origin, and if we figure out the problem is because of this particular product, and now we know that this comes from this origin, we can easily tell our suppliers कि last time you had supplied your turmeric powder from that origin, so we were facing that problem, so you need to work on that and change our origin. So this will help us a lot, but none of the guys from ours, until unless we don't ask, they are not sharing the
knowledge, they are not sharing the information. And when I connect, when I ask with the older generation, somebody was telling me the older generation used to work with traditional and all. Honestly, they were far more ahead of us. They all know मेरे को solution कहाँ से मिलता है. When I ask my uncle, when I ask my father कि we are facing this problem, तो he asked me when you bought this उसका origin क्या था, कि I don't know. तो he told me कि इस बार इस origin से लेकर देखो यहाँ का माल अच्छा आता है. And how come he knows? He knows because he had suppliers who told them कि we are supplying from these regions and they had tried and tested. So you our category as a new entrant, they are misguided. I am blessed. I belong to a family जिसमें मैं 7th generation को represent कर रहा हूँ. Probably उससे भी ज़्यादा हो सकता है. I don't have a recorded history. Yeah. So there is so much of information flown to us where we are working with suppliers who are equally 3, 4 generations old in spice segment. And we are very blessed to have that knowledge, and we are very blessed to ask those questions to the new suppliers we are getting attached to. I met one of our very old suppliers. I'll take the name, Baba Namak. Sir, very honored to meet you today. We have been communicating since last so many years through postcards. We still receive their postcard every quarter, and probably if there is a change in prices, so maybe in 15 days. The prices are mentioned. You talk to them, we are facing this kind of problem, they give us suggestions, they make a batch to you, send it to you. If it's okay, you are logged with that. If it's not okay, you can again rework with them. And like this, we have reached a stage जहाँ पे they know what we need and we know what we are getting. And trust me, my father, even for the prices, my father asked me, उनका नया postcard आया है क्या? नहीं. इसका मतलब prices change नहीं हुए. If there is a change in price, उनका postcard आ जाएगा. And if that postcard has not reached you, they will supply you at the older price. ये सब हमें नहीं मिला है. So that kind of trust has been built over the generations. The kind of work spice sector has already been doing, and I have been telling my friends and colleagues who have been into this sector, after rice again, it's time to have spice diplomacy with the world, and that can only happen when we can confidently sell our products to the world कि we are fulfilling all your law of the land requirement. Somebody mentions कि FSSAI has very stringent rules as compared to US and all. And I always tell my team कि if you are able to navigate FSSAI rules, you are able to navigate 90% of the world. You will not falter. There can be specific requirements for few countries, this is not allowed, that is not allowed. But that's completely fine. वो वहाँ की requirement है, कुछ हमारे यहाँ allowed नहीं है, कुछ वहाँ पे नहीं है. But if you are following all those norms, you are completely through. But before it becomes mandatory, it has to be voluntary. Now my request, a cooperative movement similar to the dairy industry is required to not only increase the spice production and improve regulatory frameworks. Unfortunately, we have to be very honest. In India, there is no regulatory framework at primary produce, which the previous panel had talked about. कि farmer पे control नहीं है. Obviously, 5 लाख किसान अगर 25 लाख टन मिर्ची उगा रहे हैं, तो एक किसान के हिस्से में आ ही क्या रहा है 1000 किलो. तो how much he will be concerned. But now this clear, the ball comes into the processor court. कि are they willing to work with 100 such farmers and start this movement? Look, somebody started this in dairy long back. Yeah. And मेरे अगर portfolio में if that is only 5%, and if I have to put up all the systems, grinding methods here in my premises, so this is not my failure. This is my, supplier's failure. I was discussing one of my very good friends here from BLG. I was telling them कि उस 5% में मेरे को 50 तरह के स्पाइसेस लगते हैं. अगर हर किसी की ग्राइंडिंग मैं करूं, तो मैं उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा पाऊंगा जो रोज़ 500 टन ग्राइंड कर रहा है या 100 टन ग्राइंड कर रहा है. उनके इंस्ट्रूमेंट हमसे फार सुपीरियर होंगे, उनकी क्वालिटी हमसे फार सुपीरियर आएगी, उनकी इंस्पेक्शन हमसे फार सुपीरियर होगी. बट स्टिल इफ आई एम नॉट हैप्पी एज अ वैल्यू चेन अहेड, so this is not my failure. This is my partners who have to take the onus and correct the things. Else, somebody from our industry will become the Varghese Kurian of spice. And somebody already has taken that initiative.
I'll not name that because everybody knows, you just have to figure out. But it's high time we should start collaborating at the farm level. I have quoted examples to 2-3 people this afternoon. We were importing somewhere close to 6,000 metric ton of French fries in 2012. And India exported 25,000 metric tons of French fries in 2024. In 12 years, situation has not only reversed, but we have gone far ahead. And I guess, other than salt, everything is sold above what potatoes are being sold at. सिर्फ एक नमक है जो आलू से कम प्राइस पे बिकता है, लूज में, पैक में वो भी उससे ज़्यादा में बिकता है. सो दिस थिंग्स आर पॉसिबल. और नाउ देयर इज की प्राइस नहीं मिलता. सर इस साल हम मिर्ची अगर 400 रुपये 500 रुपये KDL इफ आई एम बाइंग एट 700, तो विद स्टेबिलिटी कल मुझे 200 में मिला और मैं 700 में खरीद रहा हूँ, तो प्राइस का तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना. देयर इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस, इट्स द गारंटी विच कैन कम विद इट. इफ देयर इज अ गारंटी, नॉट वारंटी. If it's the guarantee, there is a difference between confidence and assurance. Confidence helps me to use that product, and assurance comes when it is cleared after the usage. I always tell my team, I always ask my buyers कि भाई all these tests, all these reports, all this sourcing helps us in giving confidence that we can ship the product to you. But once it is cleared there through your customs, we are assured now कि our entire chain established is very good. So I request my entire fraternity, our partners, because look, without spice, our products are as bland as, मतलब what to say, मतलब हम कुछ नहीं है, मतलब without spices we are nothing. Our strength, nobody says कि our strength lies in making bhujia. People say our strength lies in identifying the right spice, right blend, and making bhujia out of it. Our products become, talk of the town only when we are able to use the right blends of spices, right quality of these spices. So in spite being the 5%, you are heart of our system, you are backbone of our system. In fact, you guys, you are the raw brain of our system. If we are guided right, if we are supplied right, trust us, along with us, when you will rule the world, we are bound to be there at the top. Thank you.